going over what we discussed yesterday. If we are given a linear equation and it contains only one variable, तो उसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, it will be a point on the number line. Simply, जो भी वेरिएबल है वो बात की बात है. अगर आपके पास इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, तो that will be representing a point on the number line. If your equation contains two variables, then it represents a line. सेम इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल था, उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ लीनियर इक्वेशन in two variables. This is something we did yesterday. The equation we had contained only x. This equation here, it contained only x. We have rewritten it by using two variables. हमने y वाली टर्म खुद इंट्रोड्यूस की. उसके बाद जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया, तो हमारे पास ये लाइन आई. एंड what we can observe from the solutions, अगर हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को ऑब्जर्व करें, what do you see कि y की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, x is same. If you look at the solutions you obtain for the linear equation containing two variables, अगर आप इस इक्वेशन को चेक करो, आंसर्स को चेक करो, the answers have x having the same value -4.5, y की वैल्यू चेंज हो रही थी. दिस मींस आप y की कोई भी वैल्यू यूज कर लो तो आंसर x का क्या आना है, -4.5. विद द हेल्प ऑफ दीज 3 पॉइंट्स जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमें ये वर्टिकल लाइन मिल गई. So this is where the meeting ended yesterday, and observing this graph we obtained for the linear equation, it is actually a line parallel to y-axis. Yes, Dharya? Ma'am, we could also use the value of x. You could use, but y cannot be calculated from there. आपके पास जो equation है, this is 2x plus 0y plus 9 equals to 0. Tell me which value of x you want to use here. Ma'am, 1. Okay. Let us take x as 1. This becomes, okay, so this becomes 0y equals to -11. This gives you the value of y as -11 over 0. Can we have a rational number with denominator 0? No. So this is meaningless. अगर आप x की कोई वैल्यू यूज करके y फाइंड आउट करना चाहते हो, तो जो आंसर आएगा, it is not defined. Such a value does not exist. इसलिए because आपकी टर्म में तो y exist ही नहीं कर रहा था ना, इसलिए the coefficient is. Now I just want to make another observation before we start with our exercise. The equation given to us contained only x. जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी थी उसमें सिर्फ x था, उसको हमने लिखा in two variables. Equation contained only x, represented as linear equation in two variables. तो जो ग्राफ बनता है, वो लाइन जो बनी, वो तो हमें पता है कि लाइन बननी है. अगर आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वाली है, लाइन तो बननी है, बट वो लाइन किस तरह की बनी, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. इक्वेशन में सिर्फ x था, लाइन किसके पैरेलल आई है, वाई एक्सिस. और अगर आपकी इक्वेशन में सिर्फ y होता तो हमारी लाइन किस तरह की होती, पैरेलल टू x एक्सिस. ऑपोजिट रिलेशन है यहाँ. इफ योर इक्वेशन कंटेन्स x, it will be a line parallel to y-axis. If your equation contains y, then it will be a line parallel to x-axis. They have given you two questions, एक x वाला है और एक y वाला है. जब आप ग्राफ बनाओगे आपको पता चल जाएगा. चैप्टर की जो समरी है, गुड मॉर्निंग बेटा, जो चैप्टर की समरी है उसमें उन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है. प्लीज नोट, if you look at the summary is on page number 77. Let me just turn to the book here. So this is page number 77. इस summary के points हैं 5th और 6th. अगर आपकी equation इस तरह की है, x equals to something, x equals to a is a number, तो आपको लाइन मिलेगी पैरेलल टू y एक्सिस. और अगर आपकी इक्वेशन है y equals to a number, it will be a line parallel to x-axis. Please keep a note and you have to learn this.
ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वेशन x इक्वल्स टू a, इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह की लाइन होगी. It passes through the origin, it is parallel to x-axis, it is parallel to y-axis, or it is x-axis, कुछ भी हो सकता है. They could give you multiple choices and then you can pick the right one. The right answer is, it is the line parallel to y-axis. So direct question can be asked based on this. Point number 7 here, अगर आपकी equation इस तरह की है, there is no constant. No constant in your equation. एक term y वाली है, एक term x वाली है. Constant term नहीं है. This passes through the origin. This I have already discussed with you. Fine. Always revise the chapter summary when once you are done with the chapter. एक बार chapter summary जरूर revise किया करो. It covers up all the topics that you have studied in the chapter, so that in case you have missed something or you don't understand anything in the summary, you can discuss that. Means आपको पता हो कि आपने ये चीज पढ़ी है. Let's start with the first question here. M is the constant. M is the constant. Some other real number. Those who will be taking up math in the higher classes, you will learn कि ये जो equations हैं, इनको sorry, ये जो lines हैं, we are obtaining with the help of linear equations. इसका opposite भी किया जा सकता है. अगर आपको बताया हुआ है कि कोई लाइन है वो ये वाले पॉइंट्स में से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन बनाई जा सकती है. You will be doing that in higher classes. So let us first draw the graph for this linear equation in one variable. पहले हमें ये काम करना है. इसको ऐसे assume करना है जैसे ये हमें दी हुई है, one variable. So y equals to 3. नॉर्मली हमारी कोशिश होगी हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करें. यहाँ पे तो डायरेक्टली वैल्यू इंडिकेट की हुई है. दिस रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. नाउ सिंस द नंबर लाइन इज यूनिडायरेक्शनल, वन डायमेंशनल होती है, आप चाहे उसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करो चाहे वर्टिकली ड्रॉ करो, डजंट मैटर. Let's take the number line, equal divisions. You can mark them 1 centimeter apart. Somewhere you will have 0. Towards the right, you will have positive values. Towards the left, you will have negative values. The point where you see the value 3, mark that as a point. This represents your graph for the given linear equation. ये तो बहुत इजी है. Same equation. Equation number 1, graph for equation 1 as linear equation in 2 variables. Rewrite your equation. Express the given equation with 2 variables now. आपको सिर्फ y नजर आ रहा है, x नजर नहीं आ रहा.
तो x वाली टर्म हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर देंगे 0x plus 1y equals to 3. Now this is a linear equation containing two variables. Find out three solutions for this and plot the graph. I could do this. मैम एक्स वाई को हम मैम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। x की कोई भी वैल्यू लिख सकते हो आप। मैम वाई की y आपको देखो y की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में बता दिया उन्होंने, y equals to 3, वो फिक्स्ड रहेगी। y will always be 3 whatever value of x you use. So that's a clue for you. अगर आपकी इक्वेशन आपको x की वैल्यू दे रही है तो y चेंज होगा, x सेम रहेगा, बिकॉज x की वैल्यू वो बता रहे हैं आपको, वो सेम रहेगी, y will change. यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है, x चेंज होगा। ओके मैम। So you can use different values for x and obtain the value of y as 3. Ma'am, we cannot use -1. You can use, let's use -1. 0 multiplied by -1 plus y equals to 3. ये फिर से क्या आएगा, y equals to 3 आएगा आपके पास। So the three answers, पहला आंसर हमारा आया A 0, 3, next answer is B 1, 3, C -1 and 3. We have to plot these on the graph. I'm just going to do here on this side. Okay, where would point A be? Anyone who can tell me A point kahan pe located? On y-axis. A will be located on y-axis. This is point A 0, 3. Point B 1, 3. It will be right here. Let me just change the color. Okay. So this is point B 1, 3. Then we have point C -1, 3. In quadrant second. Now, if you join these 3 points and obtain the line formed is a line parallel to x-axis. ये हमारी इक्वेशन थी 0x plus 1y equals to 3. वैल्यू y की थी सीधा, इक्वेशन y में थी, the line we have obtained is parallel to x-axis. Tell me if it is clear कि किस तरह से काम करना है आपको. Anyone who has questions? मैम Yes. मैम अगर इक्वेशन में x गिवन है तो मैम वो y एक्सिस के पैरेलल आएगा। Yes. ओके मैम। Anyone else with any question? Tell me if you've completed the graph.
Can we proceed to the next question? Have you completed the graph? Ma'am, Anyone who is still on this question? Gulrupita, I can't hear you. I think you are unmuting and saying something. No, I'm not saying anything. Okay. Next, we have linear equation given as 2x plus 9 equals to 0. This is the one जो मैंने कल example लेके आपको explain किया था कि how do we give the geometric representation if we take this as an equation in one variable and if we take this as an equation in two variables. So exactly the same thing. Let's start by writing down the equation. एक बार उसको one variable वाली equation मान लो, एक बार उसको दो variables वाली equation मान लो, and quickly do your work. So you have to solve and find x. You can express it in a decimal number if you want. It will be a point on the number line. So minus 4.5 will be somewhere here. X equals to negative 4.5. This is the graph. Ma'am, Yes. ma'am, for the number line, we have to draw it on the page or we have to draw it on the graph paper. The number line can be drawn on the regular sheet. Okay, ma'am. आपकी जो notebook है आप इसी पे कर सकते हैं. So I have introduced the term containing y. Let's find out three solutions to this and plot the graph. अब आपको पता होगा हम ये वैसे कर चुके हैं, बट आपकी इक्वेशन में क्योंकि x था, उसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी, वो आपको पहले से मिल चुकी है. The value of x will be minus 4.5 every time you use any number in place of y. y की जगह पे आप कुछ भी यूज कर लो, x का आंसर क्या आएगा? minus 4.5 आएगा. If you want, you can write this down. ये जो x की वैल्यू यहाँ पे आई है, ये सेम वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी. y चेंज होगा. Put y equals to 0. X comes out to be minus 4.5. Put y as 1.
The points we will represent are, let's change their names. Minus 4.5 comma 0, minus 4.5 comma 1, then minus 4.5 and minus. Anyone who is writing down the answer to the first part, tell me if I can scroll it. Anyone who is writing down the answer to the first part, the number line thing? Let's plot the graph. Point P, it will be on x-axis. Yes, ma'am. This is point P. The coordinates are minus 4.5 comma 0. The next point that we have is Q, minus 4.5 comma 1. This will be point Q. Then the third point that you have is R, negative 4.5 and minus 1. So this will be R. Joining these, drawing the line. This is the graph for this equation. ये जो आपकी equation in two variables है. This one. The line is parallel to which axis? Y-axis. Y-axis. Complete it and tell me in case anyone has any questions. And do let me know once you finish this. Ma'am, Yes, Krishna. ma'am, like in question number 2, ma'am, in the equation x is given, and ma'am, when we plot it on the graph, ma'am, the value of the x is always same, and same with the question number 1 in the form of y. So I would like to ask that in the equation, if the x or y is given, the value of that variable in two variables will be always same. Pardon, I could not understand. If your equation contains both variables, No, ma'am, single variable x or y. either x or तो y. मैम यस, तो मैम अगर हम उसको टू वेरिएबल्स फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो मैम उसका जो जैसे y है इक्वेशन में भी गिवन है, तो जब हम उसका निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी. वही वाली yes, जो आपको दी है ऊपर मिल रही है. ओके मैम, थैंक यू. Anyone else with any doubt? All right. So this completes your chapter number 4. I'll share the assignment with you in a day or two. Do revise this chapter. It's extremely important because अभी हम क्या कर रहे हैं? We are working with linear equation in one variable. जितने हमने questions किए हैं, at a time हमारे पास सिर्फ एक equation थी. In 10th standard, you will be working with pair of linear equations containing two variables. If I had to give you an example, just to tell you. So let us write two equations. एक बार ये ले लो 7x plus 5y equals to 9. एक equation है. So एक ही question में आपके पास there will be one more equation.
Let's say this. So this is a pair of equations. And what type of equations these are? These are linear equations in two variables. This is something you will be doing in 10th standard. All right. So that will be all with respect to chapter number 4.